Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education, and today I am back again with yet another video for all of you for the class 10 board examination, that is from history, nationalism in Europe. Now this is a very important chapter with Mark's point of view and also knowledge point of view, because this is a very important chapter with respect to the spread of nationalism throughout the world. From Europe, we started the idea of nationalistic sentiment, love for the nation, belonging to the nation, and this further on spread. And because of nationalism turning into imperialism, that is nationalism, जो लोग national होते थे, जिन लोगों में देशभक्ति की भावना थी, वो परिवर्तित हो गई और वो एक तरह से it changed to a sense of spreading the terror of that country throughout the world, spreading the reign of that country throughout the world. उस country का राज्य पूरे विश्व में स्थापित करना, ये एक तरह की धारणा बन गई. And this is what needed to be changed, right? So that is what we focus on in this chapter. How nationalism perpetuated in Europe. Nationalism का जन्म यूरोप में हुआ and then it spread across the world like wildfire. And because of it being changed to imperialism, it created nationalism in colonial countries like India, right? So that's what we're going to look at in this chapter. So first of all, we're going to start with the first unit, which is French Revolution and the idea of the nation. How the French Revolution, which is a very important revolution in Europe, it started the idea of a nation and what that idea of the nation was, right? So you know that the French Revolution in 9th standard you have studied. French Revolution began in 1757. 1757 में French Revolution start हुआ and it was responsible for the spread of the idea of nationalism and the eruption of the idea of the nation state across Europe. Now ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1757 में स्टार्ट हुआ, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप में एक आइडिया स्प्रेड किया. किसका आइडिया? नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया. राष्ट्रता, इसको हिंदी में कहते हैं, नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड किया. और इस आइडिया की धारणा जब आई, इस आइडिया की ये आइडिया जब आया हमारे पास, तो एक नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैल गया. ठीक है, नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट इज बेसिकली a country which has relation between citizen and government, where there is a relation between citizen and government. Such a place is called nation state. ठीक है, तो ऐसा नेशन स्टेट पूरे यूरोप में एक आइडिया बनने लगा. ठीक है, कैसे बनने लगा धीरे धीरे देखते हैं. The French revolutionaries tried to inculcate nationalist sentiments among the French people, with the use of symbols, texts and songs. अब आपको पता है, when we were studying nationalism in India, then too we saw that revolutionaries used symbols such as Bharat Mata, the Indian flag, Swaraj flag, Swadeshi movement, ठीक है, and folk tales, Indian literature. ये सब चीजों ने बढ़ावा दिया नेशनल सेंटिमेंट बनने का. ठीक है, राष्ट्रता बढ़ाने का. सिमिलर वे में फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ट्राइड टू इनकलकेट नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स. दे क्रिएटेड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स अमंग द फ्रेंच पीपल एंड विद द यूज ऑफ traditional things belonging to the country. The French Royal Standard, जो एक तरह का फ्लैग होता था, it used to be a flag. French Royal Standard was a flag of France, but it was designed in such a way that it showed the dominance of the king, right? But since a more democratic approach was coming, it was replaced with a tricolor. और एक tricolor ऐसा बनाया गया जहां पे equality depict की जा सके. ठीक है, every color represented a part of the nation. So that French Royal Standard, which was more of a monarchical flag, it was changed to a tricolor flag. French as spoken in France. फ्रेंच जैसे फ्रांस में बोली जाती थी, इट वॉज इनकरेज थ्रू आउट द कंट्री. अब जैसे फ्रेंच वो फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, जैसे वो फ्रांस में बोलते थे वैसे ही, जैसे वो पेरिस में बोलते थे वैसे ही पूरी कंट्री में फैलाया गया. और लोकल डायलेक्ट्स, जो लोक भाषा थी, दैट वाज लोगों की जो आम भाषा थी, वो डिस्करेज की गई, ताकि फ्रेंच जो एक लैंग्वेज है दैट कैन बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड दैट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द कंट्री. ठीक है, the ideas of la patrie and le citoyen were encouraged. La patrie means the fatherland, le citoyen means the citizen. तो इसका भी मीनिंग आप लिख लीजिए. fatherland मतलब क्या है हमारे, जैसे हम कहते हैं अपनी मातृभूमि, ये कहते हैं अपनी पितृभूमि. ठीक है, and le citoyen means citizen, right? So ideas of le patrie and le citoyen were encouraged, right? कि fatherland, we have a fatherland, ये हमारा
पितृभूमि है, and le citoyen means citizen. The idea of citizen was encouraged. Then a States General was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि States General बनी थी in the tennis court. If you remember, if you have studied French Revolution last year, then it will be very easy to relate. A body of active citizens was elected in the tennis court and it was renamed the National Assembly, right? A States General में basically there used to be 3 estates and each estate had one vote, but 2 of the estates, that is the clergy, जो church के लोग होते थे, and the nobility, the kings and queens, they were the monarchs, they were always hand in hand and they always used to have 2 to 1 vote, और जो last estate था वो हमेशा गरीबों का estate होता था, and always the clergy, church people and the nobility, the kings, were always against the poor common citizens, right, peasants, and Hamesha they were hand in hand, they used to vote against the wishes of them. That's why States General was very undemocratic, and it was later after French Revolution renamed the National Assembly, and a body of active citizens used to elect that National Assembly, right? The only difference was that this active citizens was not complete universal adult franchise, because only certain citizens could vote. They should have property, they should be males, not females could not vote, and they should be 25 years and above, right? So these were some parameters for active citizens. And then a centralized administrative system was put into place and it formulated uniform laws for all citizens. A centralized administrative system, एक केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया जहां पे बेसिकली एक तरह से पूरे कंट्री को गवर्न करने के लिए एक सेंट्रल सिस्टम बनाया गया, एंड दैट कुड बी गवर्निंग द इंटायर कंट्री, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द इंटायर कंट्री, राइट? जैसे हमारे यहाँ आईएएस है. Clear? Let's move on. Moreover, they were influenced by the French Revolution. Students and educated middle class, जो students थे, educated middle class थे, they began setting up Jacobin clubs. And Jacobin clubs, again, you have studied in 9th standard. Basically, they were clubs formed where they used to discuss various political reforms, economic reforms, and basically they were centers of discussion. ठीक है? And mainly students or educated middle classes. आजकल भी आप देखें हमारे students बहुत active हैं politics में. कोई आम आदमी पार्टी के साथ है, कोई भाजपा के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है. So always in a similar way, not at such a higher level, but such organizations came into being then as well, and French armies moved into various parts of Europe, and this was especially during the rule of Napoleon. Especially during the rule of Napoleon, French armies moved into various parts of Europe, such as Holland, Switzerland, etc., to spread the ideas of nationalism and national sentiments across Europe. ठीक है, ताकि फ्रांस से ही nationalism का spread start हुआ. So clear with this how French Revolution created the idea of the nation. Clear? Let's move on now to the Civil Code of 1804. अभी बड़ा interesting code है. Basically, this was a code established by Napoleon himself. Oh, sorry, कुछ issue है आज इसको लगता है. ठीक है. So the Civil Code of 1804. This was nothing but Napoleon's code. Napoleon's code. Now this was Napoleon's code, and Napoleon set up this code. And what did he do in this code? Let's see. After the rise of Napoleon and return of monarchy in France, before Napoleon came, क्या था? Democratic setup बन गया था. States General चल के National Assembly चला गया था. National Assembly had started becoming a democratic organization. So after Napoleon came back, dictatorship and monarchy came back in France. ठीक है? And a civil code was established in France and territories occupied by it. फ्रांस में और जो उसके आसपास की टेरिटरीज फ्रांस ने ऑक्यूपाई की थी, उनमें एक कोड एस्टैब्लिश कर दिया जिसका नाम था द नेपोलियनिक कोड और द सिविल कोड. ठीक है, अब ये बड़ा ही अच्छा कोड था. हालांकि दिस वाज ड्यूरिंग अ डिक्टेटरशिप रूल, बट इट वाज अ वेरी वेरी गुड एंड ओपन कोड. लेट्स सी व्हाट द कोड स्टेटेड. द सिविल कोड ऑफ 1804, नंबर 1, एस्टैब्लिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी. हर व्यक्ति के पास जायदाद होनी चाहिए. देयर शुड बी प्रॉपर्टी विद ईच एंड एवरी सिटीजन, राइट? तो एस्टैब्लिश राइट टू प्रॉपर्टी. सेकेंड इज अबॉलिश्ड फ्यूडल ड्यूज. अगर आप क्लर्जी के अंडर हैं तो आपको क्लर्जी के लिए कुछ ड्यूज पूरे करने होंगे, उनके लिए कुछ काम करने होंगे, उनके लिए कुछ फेवर्स करने होंगे. सो दिस सिस्टम ऑफ फ्यूडल ड्यूज वेयर यू यूज्ड टू एक्चुअली हेल्प द क्लर्जी एंड नोबिलिटी, स्पेशली द लोअर पीपल, जो चर्च और किंग्स वगैरह होते थे, उनकी हेल्प करनी पड़ती थी, वो सिस्टम बंद कर दिया गया. ठीक है, एवरीवन वाज कंसिडर्ड इक्वल, स्टिपुलेटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सबको बराबरी का दर्जा दिया गया. क्लियर? सो द सिविल कोड एस्टैब्लिश्ड 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एस्टैब्लिश द राइट टू प्रॉपर्टी, सब व्यक्ति को जायदाद मिलेगी. सेकेंड, फ्यूडल ड्यूज,
कोई भी किसी के अंडर सेवक का काम नहीं करेगा जबरदस्ती। एंड थर्ड, स्टिपुलेटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सबको बराबरी की बात मिली गई, ठीक है। एंड नेपोलियन, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन ऑल्सो सेट अप एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो पहले मैंने आपको कहा था एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया गया था, जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा। हियर इट वाज अंडर द रूल ऑफ नेपोलियन एंड इट वाज विद वेरी स्ट्रांग एफिशिएंसी, करप्शन नहीं था, इट वाज एफिशिएंट, अपना काम टाइम से करता था, एफिशिएंटली करता था, अच्छे से करता था। एंड इट इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सर्विसेज को इंप्रूव किया गया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज वर इंक्रीज्ड एंड इट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ uniform weights and measures, means equality, law, and every good was given fixed amount of price, right? So uniform weights and measures, that was there, and there was uniformity in the prices of goods, value of goods, and measuring of various goods. Clear? So three very important things are the postulates of the civil code: establish right to property, abolish feudal dues, and stipulated equality. And important parts were Napoleon's efforts, that is effective administration system, right? There was a very effective, non-corrupt, efficient administrative system. Then also an improved transport communication services. If these were improved, what could happen? Yes, trade increased. Because of this, trade improved drastically. And since trade will improve, country's economy will go, country की economy grow करेगी, and also introduce a system of uniform weights and measures. ये भी एक फायदेमंद काम था, because in different parts of France, the values of goods were different. ठीक है, values of goods were different, and sometimes the currency was also different. तो अब क्या है, नेपोलियन केम एंड उसने कहा कि हर जगह पर फ्रांस में एक ही करेंसी होगी, या फ्रांस की टेरिटरीज में भी एक ही करेंसी होगी। एंड इन दिस वे जो ट्रेडिंग है वो इजी हो गया, वैल्यूएशन है जो इजी हो गया। क्लियर? गुड्स का इक्वल वैल्यू था थ्रू आउट इन एवरी प्लेस। क्लियर? सो दिस ऑल्सो इंप्रूव्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द फ्रेंच कंट्री एंड फ्रेंच रूल। एंड लास्टली, ऑल्दो नेपोलियन ने काम तो बहुत अच्छे किए फ्रांस में भी और फ्रांस के आसपास की जगहों पर भी, बट हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स नेपोलियन, मतलब नेपोलियन के खिलाफ भी थोड़ी सी नफरत जागने लगी लोगों में। व्हाई? हमेशा जब कोई अच्छा रूलर आता है या कोई भी रूलर आता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनको उनकी चीजें अच्छी नहीं लगती, जो उनके इंटरेस्ट को हार्म करती हैं। तो देखते हैं यहां क्या हुआ। इनिशियली नेपोलियनिक आर्मीज वर वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स इन मेनी यूरोपियन नेशंस। हमने देखा नेपोलियनिक आर्मीज, फ्रेंच आर्मीज वेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, और इनिशियली उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। दे वर वेलकम्ड एज सेवियर्स ऑफ द मासेस, दैट दे वुड कम एंड सेव द मासेस, सेव द पीपल। जनता की सेवा करने आए हैं, जनता को एक नई दिशा दिखाने आए हैं, जनता को एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दिखाने आए हैं, और उनको ये जो फॉरेन लैंड है, धरती है, रूल है, उससे लिबरेट करने आए हैं, आजाद करने आए हैं। और उनको बहुत अच्छा लगा कि एक नया तरह का गवर्नमेंट लेकर, नया तरह का आइडिया लेकर आए हैं। ठीक है, बट they were soon met with hostility and anger. उनके खिलाफ गुस्सा, क्रोध बढ़ने लगा। There was hostility, anger towards them. Why? Because of the following reasons. Number one, lack of political freedom. End of the day, Napoleon was a dictator, right? End of the day, Napoleon was nothing but a dictator, right? End of the day. So since he was a dictator, what happened? Since he was a dictator, he did not want to give any political freedom to anyone. So because of that, people could not voice their opinions, people could not take part in political activities, and that created a sense of discomfort amongst the people. Second is censorship of critical views and media. He did not accept any criticism of his government. उसकी गवर्नमेंट की आलोचना वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। और मीडिया पर भी काफी सेंसरशिप थी। मीडिया भी कुछ कुछ चीजें रिपोर्ट कर पाती थी, हमारे इंडिया की तरह नहीं, हमारी मीडिया कुछ भी कर देती है, लेकिन सेंसरशिप ऑफ क्रिटिकल व्यूज एंड मीडिया को भी ध्यान से चीजें रिपोर्ट करनी पड़ी। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इनटू द फ्रेंच आर्मी। अब क्या है, जहां भी वो जाते थे वो कहते थे जो यूथ है, दे हैव टू बी रिक्रूटेड इन द फ्रेंच आर्मी बिकॉज यूथ आर स्ट्रॉन्ग, फ्रेश एंड दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज इफेक्टिवली टू द आर्मी। लेकिन हर यूथ तो आर्मी में नहीं जाना चाहता। Some youth wanted to do skilled work, right? But they were forced to be recruited into the army, and that also created discomfort कि हम जबरदस्ती क्यों जाएं, हमें कुछ और करना है, लेकिन उन्हें जाना पड़ता था। And lastly, increased taxation. ये सबसे बड़ी कॉज है। ये दो जो कॉजेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। Increased taxation, टैक्स बढ़ा दिए गए। Although those taxes were used for good purposes, but taxation अगर बढ़ जाए तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, because they all can't pay taxes that much, right?
So because of increased taxation, that was another problem which was seen, and people did not like this increased taxation system, and hence they were hostile towards Napoleon. Napoleon के खिलाफ थोड़ा गुस्सा बढ़ने लगा. Clear? I hope this is absolutely clear, and this was the first unit, French Revolution and the spread of the idea of a nation. I hope that's absolutely clear, and with this we come to the end of the first unit of the chapter. Thank you very much for joining me. If you have any kind of doubts, you can mention in the comment section. Okay? Mention in the comment section below. You can also reach me on Hangouts on this of the same name, Jaideep Singh's Interactive Education, and you can also mail me at jaideepsudan@gmail.com. If you have any kind of doubt, you can mail me on this as well, gmail.com, right? And in the next video, we'll be looking into the next unit of this chapter. Again, a very interesting chapter. Any kind of comment suggestions are welcome in the comment section below. Like and please subscribe. Best of luck for your examinations, and we'll see you again very soon. Thank you very much for joining me. Goodbye.